Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Arshita, switch on your camera. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. प्रियांशी अपना वीडियो ऑन कीजिए. एंड मसूमा 10th D वीडियो ऑन कीजिए अपना. दिशा, उज्जवल, संध्या वीडियो ऑन. Sandhya and Ujjwal. उज्जवल वीडियो ऑन कीजिए. अर्शिता, और अगर आप क्लास के बीच में बार बार अपना वीडियो ऑफ करेंगे, मैं एब्सेंट मार्क करूंगी आपका. ठीक है, तो एक बार ऑन करके छोड़ दीजिए. अब आपको कैमरा ऑफ नहीं करना है. आज से मैं एब्सेंट मार्क करूंगी अगर आपने ऑफ किया है बीच में. Arshita, your camera is still off. संध्या वीडियो ऑन करो बच्चों जल्दी से. Okay. अर्शिता, Okay, let's get started. Okay. एंड मसूमा ये कौन है? संध्या का भी ऑन हुआ था वीडियो. संध्या, कीप इट ऑन. सर 1 मिनट बस कर रहे हैं. हाँ, ओके ओके. ये मसूमा कौन है सर? वीडियो ऑन है पर ब्लॉक किया बच्चे. कैमरा ब्लॉक नहीं करना है. कैमरे के सामने से हटाइए. क्या रखा है आपने? No, sir. Okay. So let's get started. Sandhya, your camera is still off. कर लीजिए on उसको. ठीक है. So we will start the revision for the next chapter, which is trigonometry. Okay, so we'll do a few questions to revise this. Theoretically, it's a very, very simple chapter. Okay. The important thing is कि इसमें जो questions हैं वो थोड़े manipulation based questions होते हैं. ठीक है. And let's work on those. So A plus B is equal to 90 degrees. Okay. A plus B is equal to 90 degrees and A is equal to 2B. Then the value of cos 2B is, it's an easy question.
कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, है ना? 3b a will be 2b, so 3b is equal to 90 degree आएगा, तो b is equal to 30 degree. इसका 1/2. Okay, so 2b is equal to 60 degree and cos of 60 degree is 1/2. 1/2. If x is equal to a sec theta plus b tan theta and y is equal to a tan theta plus b sec theta, then the value of x square minus y square. Okay, I think the question is written wrongly. Okay, the value of x square minus y square is, okay, so we just square the two things and add them up, right? So what is x square and subtract? What is the value of x square? A square sec square theta plus b square tan square theta plus 2ab sec theta tan theta. Okay, similarly y square will be a square tan square theta plus b square sec square theta plus 2ab sec theta tan theta. Okay, so we will subtract the two equations. So we will get x square minus y square. Okay, so these two terms will get cancelled out and we will be left with this. So what we could do is a square, and we could take a square minus b square sec theta, sec square theta, and then it will be minus a square minus b square tan square theta, right? I am skipping a step here, but you can see this, right? So we take a square minus b square outside. Inside the bracket we will have sec square theta minus tan square theta, and this evaluates to, what is the value of this? So 1. 1. So the answer is a square minus b square. Okay. If cos theta by 1 plus sin theta minus 1 minus sin theta by cos theta is equal to 2k, then the value of k is. Okay, so what is k? K is equal to half of this quantity. So what is this quantity? We can take the LCM, cos theta 1 plus sin theta, and we will get cos square theta minus, what will this be? 1 minus sin square theta. So 0 है क्या की value? Yes, the value will be 0, right? So because now this will be half cos square theta plus sin square theta minus 1 by cos theta 1 plus sin theta. Okay, the numerator is 0, the denominator is not 0, so the value is 0. Okay, obviously in the exam you have to show one more step, okay, which is to say half 1 minus 1 and the denominator. Okay, you should write that, don't miss out that step, and a 0. Fine. Okay, so a very similar question now again.
A cos x plus B sin x is equal to 3 and A sin x minus B cos x is equal to 4. We have to find the value of A square plus B square. Okay. So what should we do? We need square terms, right? So it's a good idea to square the two equations and then add them up and see if we can get the result. We don't know, but that is how we have to try, and most likely we will get the result. So we will say A square cos square x plus B square sin square x plus 2ab sin x cos x is equal to 9. And we will get A square sin square x plus B square cos square x minus 2ab sin x cos x, right, is equal to 4 square, which is 16. We add the two up, right? So we will get A square, and we can see we will get this plus this, right? So A square plus B square cos square x plus in the bracket again A square plus B square sin square x is equal to 25. Okay, we take A square plus B square as common. In the bracket we will have cos square x plus sin square x, which is equal to 1. So we are left with only A square plus B square is equal to 25. Okay. So as I said, most of the questions tend to be just these kind of manipulation questions. Okay. So all of these are obviously degrees. I didn't write it. Typing a degree is difficult. Okay. So what is the value? Is 1. Yes. So, um, 10, 15 degrees is same as cot 75 degrees, right? So this and this will cancel out. Similarly, this and this will cancel out. They are complementary angles. And this is anyway equal to 1. So the answer. Tan 45 is equal to 1. Okay. Anybody who does? शेखर सर शेखर कसाना अपना कैमरा स्विच कीजिए, क्या कर रहे हैं आप? रुद्र शर्मा, आपका कैमरा ऑफ है? जल्दी कर लिया ऑन। बहुत सारे कुछ स्टूडेंट्स में कई बार देखता हूँ, बहुत तो नहीं कहूंगा, जो बाहर कहीं होते हैं, या तनवीर आलम आपका कैमरा रॉन्गली पोजीशनड है। ओके, कीप इट प्रॉपरली। बेटा आप विजिबल होने चाहिए। अजय, योर कैमरा इज ब्लॉक्ड। ठीक है, तो 10x प्लस sec x हमें गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है sin x की। ओके सर, एक बार आप शेखर का कैमरा चेक कर लीजिए, आप एक बार वार्निंग देके रिमूव कर दीजिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो। Ajay, your camera is also blocked, and what is Shekhar doing? स्विच हो रहा है सर कैमरा, कभी रोड की साइड, कभी कौन कौन आ रहा है, डोंट नो। शेखर आप बाहर हैं,
unmute yourself and answer. Shekhar Kasana, you are not taking the class from home? सर जी मैं खेत पे हूँ। बेटा मैथ्स की क्लास आप चलते फिरते क्यों ले रहे हैं? उसका फायदा क्या है? आपको कैसे समझ आएगा? कहानी सुन के आप एक जगह बैठो, खेत में हो चाहे घर पे हो, आप एक जगह बैठिए, अपना कॉपी पेंसिल लीजिए और आपको साथ में सर क्वेश्चन जी एक जगह करेंगे। बैठा हूँ, खाट पे बैठा हूँ। अच्छा, और आप ओके सर, बेटा ओके। आपका कैमरा बार बार स्विच कर रहे हैं आप कैमरा, ठीक है? प्रियांशी अपना आप हो अपना कैमरा ऑन करिए। प्रियांशी अपना वेरी कैमरा ऑन गुड, करिए। अपने आप हो जाता है। मेरा कैमरा तो ऑन है ना। प्रियांशी चौधरी आपका तो ऑन है, प्रियांशी गर्ग का ऑन नहीं है। मुझे अजय कसाना, आपने क्यों ब्लॉक किया कैमरा? ठीक है, ओके, सो लेट्स मूव ऑन। बेटा ये डिसिप्लिन मेंटेन करिए, यू आर ग्रोन अप स्टूडेंट्स। ओके, now 10x plus sec x is equal to 4 and we have to find the value of sin x. Okay, so we will have to proceed by simplifying this expression first. Okay, so let's try and do that. Sin theta by cos theta, sin x by cos x, sorry, plus 1 by cos x is equal to 4, right? Is equal to 1 plus sin x by cos x. Right? Now what can we do? How do we reach sin x from here on? by squaring on both sides. Yes, so that's a good idea. Okay, so let's do that. We have cos x is equal to 1 plus sin x. Okay, and we know relationship between sin square x and cos square x. Okay, so that could help us bring it into the terms of only sin x. Okay, so it's a very good thing to try and square it, and we should square with the one with the sin x side only. Okay, even if one was on the cos x side, we should have brought it on the sin x side. Okay, so there is no term of cos square x या cos x left later. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा इजी बनाया गया हमारे लिए कि ऑलरेडी वन इज हियर, सो इट्स इजी. ओके, सो वी विल डू 16 cos square x is equal to 1 plus sin square x plus 2 sin x, right? This can be written as 16 minus 16 sin square x is equal to 1 plus sin square x plus 2 sin x, right? So we will take everything on one side, so we will get 17 sin square x and minus 15 plus 2 sin x, that's equal to 0, right? So we can see the split easily, right? The split is very simple here. 17 sin square x plus 17x, 17 sin x minus 15 sin x, right? It is an easy split. Directly we can see the split. Okay, and we will get what? Sin x
is equal to -1 and 15/17, right? Simplifying, we will get this. Okay, so since we have still not learned, right, that sign can have negative values, actually they can have negative values, okay? मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन अभी तक हमने ऐसा कुछ नहीं सीखा है till class 10th, right? क्योंकि हम तो इसको एज अ रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स देखते हैं, जो पॉजिटिव नंबर ही होगा, राइट? तो इसीलिए ये हमारे लिए अभी के लिए दिस इज नॉट एन acceptable answer. Our answer is 15/17. Okay, so we will ignore the negative value and only give 15/17 as the correct answer. That is because we have only learned till this level. Okay. Nancy, Arsh, Anmol, बेटा वीडियो क्यों ऑफ हो रहे हैं? You will lose your attendance. सर हमने अभी ऑफ किया है सर, कुछ काम है, अभी ऑन कर लेंगे। Okay. Okay. मेरी ऑन है नेटवर्क कनेक्शन। मयंक आपका स्टिल है कैमरा। एंड अर्शिता। The value of this expression starting from sin square 1 plus sin square 2 degrees all the way to sin square 89 degrees. What will that be? 1. The answer will be 1. Yes, sir, because sin square 89 is converted into cos square. Cos Yes. square 1 or Yes. sin square 1 plus cos square 1 is equal to 1. Yeah. So, but the answer is not 1, right? Because see, what is this? Yes, sir. Other This terms is are also. cos square 1 degree. So 1. Similarly, यहाँ पे जो नंबर है वो होगा cos square 2 degrees. So 50. हाँ, but you are getting the idea, सर right? नीरज सर। Yes, ma'am. सर शेखर को आप रिमूव कर दीजिए। Okay, ma'am. सर जी मैं क्या कर रहा हूँ? बेटा देखो, मैम इज ऑब्जर्विंग यू, राइट? मैंने नहीं देखा आप क्या कर रहे हैं, बट मैम इज ऑब्जर्विंग यू। सर सर शेखर दो तीन लोगों के साथ बैठा हुआ है और आप सर जी ये धोरे बैठे तो मैं तो आप अलग बैठ जाइए बेटा, इस तरह से क्लास नहीं होती है। सड़क पे बैठ जाऊं जी? क्यों, आप जहाँ पे भी हैं आप अलग बैठिए ना। अगर आपको हाथ पे क्लास बैठा हूं लेनी मैं है और बेटा, किधर? बेटा आप सबके साथ इस तरह से बैठ के क्लास नहीं ले सकते हैं। आप अलग जी, अपना बैठिए, खत्म आपको ही डिस्टर्ब होगा ना अगर आप सबके साथ ठीक है, बैठेंगे तो। ठीक है। और मैं ओके सर। आपको इतनी देर से देख रही हूँ, आप लगातार बातचीत कर रहे हैं। अब ये धोरा के बैठ के सर आप देख लीजिए, नीरज सर आप हाँ। देख लीजिए। शेखर बेटा आपको रिमूव कर रहा हूँ। Okay. Right, everybody gets the message, right? It is important to maintain the decorum, right? There is no learning if there is no decorum. केवल क्लास सुनने से तो हम नहीं सीखेंगे चीजें, right? Decorum and इतनी देर से discipline is वॉच important. किया जा रहा है, लगातार वो बच्चा जो है मूव कर रहा है, कभी किसी के पास बैठ रहा है, कभी किसी के पास बैठ रहा है। इस तरह से क्लास थोड़ी होती है सर। Absolutely, ma'am. Okay. So now we can see the pattern, right? That part is clear.
everybody can see the pattern that from two ends we are able to get one end can be converted the cos side of it, right? Now, there are two ways of solving the and finding the exact number. Okay, after we have found this pattern, still some students said that the answer will be 50. Some are saying, I don't know, some are saying 45, right? And so on. So what is the way to do it? We have to find that how many such pairs will get formed, right? Now, how many such pairs will get formed? Tell me that. So we can use the arithmetic progressions here. No, there is no arithmetic progression here, right? AP का definition क्या होता है कि एक ही नंबर से बार बार बढ़ता है, राइट? यहाँ पे AP तो उसको कहना ठीक नहीं होगा, मतलब हम we are creating a number which is increasing slowly and then there is a series is decreasing, right? But what we found is that when we take the first and the last term, the sum is 1. The second and the second last term, the sum is 1. And so on. Right? वो पार्ट क्लियर है सबको? अब हमें देखना है कि एग्जैक्ट ऐसे टर्म्स कितने बनेंगे. तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे. टोटल टर्म्स हैं यहाँ पे 89 क्लियरली, राइट? तो ये जो जोड़ियां हैं, ये जो पेयर्स हैं, ये कितने बनेंगे? 88 जो है इनमें से दे विल फॉर्म पेयर्स, राइट? एट ऑफ देम विल फॉर्म पेयर्स. सो वो पेयर हमें क्या रिजल्ट देगा? हर एक पेयर क्या रिजल्ट देता है? 1 का. सो 88 फॉर्म कितने पेयर करेंगे? 44 पेयर्स फॉर्म करेंगे. तो इन सब 88 का जो सम है वो होगा 44. सम ऑफ 88 terms. Now one term is left. What is that term? One term is left. Which term is left? Middlemost term. Which is the middlemost term? Odd number में middlemost term कौन सी होती है? n plus 1 by 2 is the middlemost term. Right? वो कौन सी है? Sine square 45 degrees. इसकी वैल्यू हमें पता है क्या होगी? इस टर्म की वैल्यू क्या होगी? स्क्वायर ऑफ 1 by root 2, right? So this is 1 by 2. तो plus half. So 44 and a half. ये है सम इसका. You understood? Now this, I mean, I would possibly do it this way. It is faster and it works, right? But there's another way of doing it, which is slightly more methodical. Okay, and let's do that. So we form the cos square thetas all the way back. So what will be this cos square theta? 89 degrees. Cos square
88 degrees, and so on, right? ये सीरीज मान लीजिए दिस सीरीज इज एस, सो ये भी सेम सीरीज है. Add the two, right? So we will get 2s is equal to, what is the sum of this? Sorry, sum of this and this is 1. Similarly, sum of this and this will be 1, and sum of this will be 1, and so on, right? So how many ones are there? 89 ones. So S is equal to 89. 2S is equal to 89. S is equal to 89 by 2, which is also 44 and a half. ओके तो आप दो तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं टू फाइंड द एग्जैक्ट आंसर विदाउट एरर्स. ओके, पूरी सीरीज को उल्टा लिख लिया in terms of cos square, and then we add the two series. Understood? Any doubts? Any doubts? No, sir. Okay. Okay, ठीक है. So there was one question that was asked by Arshita. Is she there in the class? Arshita, are you there? Yes, sir. Sarika, Okay. So let me just bring that question here. Okay, we will continue with this later, but let me just bring this question here for a while. अर्श अपना कैमरा ठीक कीजिए आप. Okay, this is although from physics, but it is a very good question. Okay, so we are coming to the end of the class in another 5-6 minutes. So ये question कर लेते हैं उससे पहले. We will continue with trigonometry tomorrow. Okay, they are anyway very similar questions. ये जो है एक अच्छा question है, please read it. ठीक है, तो हमें दिया गया कि एक सर्किट है इस तरह का, and we have to answer the 3 questions. They are, I mean, all are related questions. Okay. How will we do this question? Can anybody tell me? It's an interesting question. Sir, two. Mhm. The answer of question 1. Yes, that is right. Sir, R1 and R2. R1 and R2 are in Series. see, you can read the numbers clearly, because let me just write it clearly because they are very small. This is R5, right? This is R1, this is R2, this is R3, and this is R4. Will you still say the same answer? Yes, sir. You are saying which ones are in series? R1 and R2. देखिए, R1 and R2 are not in series. R1 and R2 are not in series.
ओके सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को ये देखिए, बड़ा कंफ्यूजिंग सा यहाँ पे एक नेटवर्क बन गया है, राइट? ये केवल हमें कंफ्यूज करा गया है इस क्वेश्चन में। इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है कि रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर्स या फिर you could also say plain wires, is equal to 0, right? जहां पे ये zigzag नहीं है वहां पे रेजिस्टेंस 0 है, राइट? तो अब देखिए ये क्या बन जाता है हमारा सर्किट। सबसे पहले R5 है, नो इश्यूज, ये R5 है। अब देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट जो है, they are one and the same points because there is no resistance in between. It's a connecting wire. ओके समझने की कोशिश कीजिए। तो ये हम बन गया हमारा R1 और यहां पे बन गया हमारा एक प्लेन वायर ऐसे, ठीक है? और ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में भी केवल एक खाली वायर है, तो ये भी कनेक्टेड पॉइंट्स हैं। फिर हमारे बन गए R2 और R3। R2 और R3, ठीक है? फिर हमारा है R4 और फिर सर्किट आगे कंप्लीटेड है ऐसे, बैटरी है उसके बाद एंड सो ऑन, एमीटर है, व्हाटएवर, राइट की है। आई विल नॉट ड्रॉ दोस पार्ट्स अगेन एंड अगेन, बट ये हमारा सर्किट है। यू अंडरस्टूड कैसे ये कोलैप्स कर सकते हो आप और ये भी कोलैप्स कर सकते हो। अब इस वाले पार्ट को गौर से देखिए, right? Now there is a short circuit being made. इस रेजिस्टेंस के को क्या किया गया है, शॉर्ट सर्किट कर दिया। तो इस वाले पाथ में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, तो जो भी करंट आएगा ना वो इसी में से जाएगा, इसमें से कोई करंट जाएगा ही नहीं, तो ये है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है? तो अगर हम किसी भी रेजिस्टेंस को शॉर्ट कर देते हैं ऐसे वायर लगाकर, तो वो रेजिस्टेंस का कोई फायदा नहीं रहता, उसके बाद सारे के सारा करंट जो है इसी वायर में से जाता है। तो ये R1 इज एज गुड एज नॉट प्रेजेंट, ठीक है? अब देखिए ये हमारा डायग्राम क्या रह गया, ये R5 है, उसके बाद ये तो है ही नहीं, और R2 है, और फिर है R4। अब देखिए, नाउ कैन यू आंसर द क्वेश्चंस? R5 R4 and R4. So what are in series? R4 and R5, right? Clearly. Which are in parallel? R2 and R3. R3 And if all these resistors are 2 ohms, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। ओके, इसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, 1/2 1/2 प्लस 1/2 करंट आएगा 1 एम्पीयर, राइट? तो इसकी तो 1 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, टोटल कितनी हो गई 5। और करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, सो विच इज 5/5 इज इक्वल टू 1 एम्पीयर। उसके बाद एक बार आप इस स्थिति में आ गए, ठीक है ना, तो आपको आगे सॉल्व करना बिल्कुल आना चाहिए, राइट? उसके बाद नहीं आता तो फिर तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ओके? फिर तो बहुत मेहनत की जरूरत है, ठीक है ना? अभी समय है।